श्रीराघवो विजयतेतराम् अर्चनीय आचार्य चरणानां वृदावलिः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रामानन्दाचार्यं मन्दाकिनी विमलसलिलासिक्तं तुलसीपीठाधीश्वरदेवं जगद्गुरुं वन्दे श्रीमत्सीताराम पदपद्मपरागमकरंद मधुव्रत श्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ महार्णव मंदरमति श्रीमदाद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य चरणारविंद चंचरीकाः समस्त वैष्णवालंकार भूताः आर्षवांगमय निगमागम पुराणे इतिहास सन्निहित गंभीर तत्वान्वेषण तत्पराः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा वेदांत नारद सांडिल्य भक्ति सूत्र गीता वाल्मीकि रामायण भागवतादि सिद्धांत बोधपुर ससमधिकृता शेष तुलसीदास साहित्य सौहित्य स्वाध्याय प्रवचन व्याख्यान परम प्रवीणाः सनातन धर्म संरक्षण धुरीणाः चतुराश्रम चातुर्वर्ण्य मर्यादा संरक्षण विचक्षणाः अनाद्य विच्छिन्न सद्गुरु परंपरा प्राप्त श्रीमद् सीताराम भक्ति भागीरथी विगाहन विमलीकृत मानसाः श्रीमद् रामचरित मानस राजमरालाः सततम शिशुरूप राघव लालन तत्पराः समस्त प्राच्य प्रतीच्य विद्या विनोदित उपस्थितः राष्ट्रभाषा गिर्वाण गिरा महाकवयः विद्वन्मूर्धन्याः श्रीमद् राम प्रेम साधन धन्धन्याः शास्त्रार्थ रसिक शिरोमणि विशिष्टाद्वैतवादानुवर्तिनः परमहंस परिव्राजकाचार्य तिरण्यवर्याः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः प्रस्थानत्रयी भाष्यकाराः उत्तर प्रदेशस्थ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतयः श्रीवाणी पुरस्कार समलंकृताः वाचस्पतयः महामहोपाध्यायाः राष्ट्रपति पुरस्कृताः साहित्य अकादम्या पुरस्कृताः भारत राष्ट्रपतिना पद्म विभूषणेन विभूषिताः श्री चित्रकूटस्थ मंदाकिनी विमलपुरी निवासिनः श्री तुलसी पीठाधीश्वराः धर्म चक्रवर्तिनः श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्याः अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराजाः विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। श्री यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय गुरुवर्थे त्यक्तराज्योऽभ्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भत्रष्टाब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कंदावदातं जनपारिजातं काकानुगं कल्पितकाकपक्षं श्रीराघवं बाणधनुर्दधानं वक्रालकं बालकमाश्रयामि। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सर्वे भगवन् नाम संकीर्तन मया सही विधा मया सह अथवा माम अनुविधास्यन्ति अनन्तरं किमपि चर्चयिष्यामि।
श्री राम जय जय राम। 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 धर्मस्य जयोस्तु। अहं कथयिष्यामि धर्मस्य भवन्तः वदिष्यन्ति जयोस्तु। अहं कथयिष्यामि अधर्मस्य भवन्तः कथयिष्यन्ति नाशोस्तु। अहं कथयिष्यामि प्राणिषु भवन्तः कथयिष्यन्ति सद्भावनास्तु। अहं कथयिष्यामि विश्वस्य भवन्तः कथयिष्यन्ति कल्याणमस्तु। उच्चैः वक्तव्यं धर्मस्य जयोस्तु। भवन्तः संस्कृतज्ञाः सन्ति किमिदमाचरन्ति। अधर्मस्य नाशोस्तु। नाशोस्तु। अहम अधर्मस्य कथयामि, भवन्तः केवलं नाशोस्तु कथयिष्यन्ति। कश्चन संस्कारो न दृश्यते। पुनः धर्मस्य जयोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु। प्राणिषु सद्भावनास्तु। विश्वस्य कल्याणमस्तु। जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम। स्वस्तिस्तु विद्वत्कुलशेखरेभ्यः। स्वस्तिस्तु शास्त्रार्थविदाम्बरेभ्यः। स्वस्तिस्त्यो मंडित गौरवेभ्यः। स्वस्तिस्त्यो वै धृतवैभवेभ्यः। मान्याः सुरभारती चरणारविंद मकरंद रोलंब भूताः परम पूताः बन्नंजय गोविंदाचार्य वर्याः अस्मत् सखाः अस्मन्मित्राणि अस्मत्सुहृदः अन्ये च तेषाम् अन्तेवासिनः तेषां भक्ताः एवं गोविंदाचार्याणां तनुजा आजीवनं स्वीकृत कौमार्य व्रता अस्माकं कनीयसी भगिनी तत्र भगवती तत्र भवती वीणा। वीणां दृष्ट्वा वीणा पाणिमेव स्मरामि। मामकीने मनसि महान् मोदो जातः। भवताम् आमन्त्रणं प्राप्तं यद्यप्यहम् आगन्तुं परिस्थितौ नासम्। अनेके भवन्ति कार्यक्रमाः अस्मादृशां पद्मविभूषणभाजाम्। अनेकानि भवन्ति राष्ट्रीयाणि सामाजिकानि सांप्रदायिकानि च दायित्वानि। किंतु मंजुनाथ माध्यमेन गोविंदाचार्याणाम् आमन्त्रणं मया यदा प्राप्तं तदैव आगन्तुं यः प्रवर्धमान लोभ आसीत् तस्य संवरणं विधातुं नाशकम्। अतएव आगतोऽस्मि। मान्याः विदां कुर्वन्तु तत्र भवन्तो भवन्तः। मया निश्चितमासीत् कि हिंद्यां न वदिष्यामि, न वा आंग्ले न वा कस्याञ्चित् भाषा। यद्यपि दाक्षिणात्यानाम् एका इयं परंपरा समीचीना वा दुष्परंपरा वा अहं न वेद्मि। इमे संस्कृतं तु वदन्ति किन्तु मध्ये मध्ये आत्मनः योग्यतां ख्यापयितुम् आङ्ग्लभाषामपि तत्र निवेशयन्ति। अयं दुर्भाग्यविशेषः। भारते वर्षे वयं तिष्ठामः, भारते वर्षे वसामः, भारतस्य अन्नं खादामः,
भारतस्य जलम पिबामः यदि भारतीय भाषासु आदरो नास्ति तर्हि त्यक्त्वा भारतम् अन्यत्र गन्तव्यम्। का आवश्यकता? अहमपि आङ्ग्लभाषां जानामि, वक्तुमपि पारयामि, किन्तु प्रयासं करोमि कि भारतीयानां समक्षम् आङ्ग्लभाषायाः व्यवहारो न भवेत्। अरे संस्कृतं वदन्तः धाराप्रवाहं संस्कृतं वदन्तु, संस्कृते श्रमं कुर्वन्तु। आगच्छन्तु गोविन्दाचार्याणां परितोषार्थं, तत्र भवतां च परितोषार्थं भागवतस्य विषये किमपि वक्तुं समीहे। मध्वाचार्य परंपरायां भागवतस्य एका विशिष्टा टीका तां कदाचित् भवन्तो जानन्त्येव। सा टीका नाम विजयध्वजी टीका। विजयध्वजाचार्याः भगवतः अवतारानुरूपं बहुमधुरं व्याचक्षते। तेषां व्याख्याने भगवत अवतारेषु जरीदृभ्यमाणा श्रद्धा विलोक्यते। तत्र भागवतं नाम किम् इति व्याख्यावसरे किमपि निगदितुं शक्यते। एतस्य ग्रन्थस्य नाम श्रीमद्भागवतम्। यथोक्तं भागवतस्य प्रथमस्कन्धस्य प्रथमाध्यायस्य द्वितीये श्लोके धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इदं नाम श्रीमद्भागवतम्। किं नाम भागवतम्? अधुना किमपि विचारयामि। भगवता पंचकृत्वः प्रोक्तं भागवतम्। प्रोक्तार्थे तेन प्रोक्तम् इत्यत्र इत्यनेन आण। इदमेव भागवतं भगवतः ब्रह्माणं प्रति नारायण रूपेण, नारदं प्रति ब्रह्म रूपेण, वेदव्यासं प्रति नारद रूपेण, शुकाचार्यं प्रति वेदव्यास रूपेण, महाराजं परीक्षितं प्रति शुकाचार्य रूपेण पंचकृत्व प्रोक्तमिति। ममेत्थं प्रतिभाति। यतो हि वयं तु निरन्तरं वैष्णव दृश्ये विचारयामः। यथा भगवतोऽभिषेकस्य पंचामृतं भवति, तत्र दुग्धाभिषेकः, दध्यभिषेकः, घृताभिषेकः, मध्याभिषेकः, शर्कराभिषेकश्च। तथैवेदं भागवतं शालग्रामरूपस्य विगलित समस्त खेदस्य निरस्त समस्त पुंगदोष शंका पंक कलंकावकाशस्य परिकलित निखिलिमुन मन कमल कोकिल कमनीय हासस्य संदृष्ट प्रातिभ प्रागल्भ मंडित पंडिताखंडल मनोविलासस्य निरस्त समस्त खेदस्य विगलित विच्छेदस्य अपौरुषेयस्य साक्षात् परमात्मभूतस्य भगवतो नारायणस्य वेदस्य पंचाभिषेकोऽयं भागवतः भागवत नाम इत्येव मामकीनं किंचन मनीषितम्। अर्थात पंचामृताभिषेकोऽयं भगवतो वेदस्य नारायणस्य। अतएव मया निगदितं पंचकृत्व प्रोक्तं भागवतम्। प्रोक्तार्थे अण
श्रीमच्च तद्भागवतम श्रीमद्भागवतम इति तद्धित गर्भ कर्मधारय तत्पुरुष समासः। पुनश्च इदं भागवतम नाम किम? अत्र तस्येदमिति षष्ठर्थे अण प्रत्ययः, अर्थात भगवतः सदैश्वर्य संपन्नस्य ऐश्वर्य धर्म यशस्वी ज्ञान वैराग्य युक्तस्य ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजो वीर्य मंडितस्य मोदित समस्त पंडितस्य सततम अखंडितस्य शास्त्रव कुल कमल कदन चिकीर्षा चंडितस्य जानकी हृदय चंदनस्य रघुनंदनस्य आनंद कंद मुकुंद सतत मुर्जन परिपीत चरणारविंदामंद मकरंद सच्चिदानंद परमानंद गोविंद दशरथंदन दैत्य निकंदन निखिल नंदन कानन कमनीय कुसुम विहिताभिनंदन जानकी हृदय चंदन मर्यादा पुरुषोत्तम मैथिली मनोरम राजाधिराज महाराज भूपाल चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि श्याम सुंदर सरजू तरल तरंग विक्षालित पादार बिंद निस्संद मान प्रेम मकरंद विलुब्ध निकुनि मनमनो मलिंद बृंद बृंदारक गण जे गीयमान गुण गौरव भग्न भक्त रव सतत अभिनव भूपाल पूग पुरंदर सकल गुणगण मंदिर निरस्ते समस्त हे गुण प्रत्यनेक सकल कल्याण गुण गणैक निलय प्रणय परिकलित प्रणय जन प्रणय परम विशोकोत्तम श्लोक विनोदित मुखरि निखिल मन मन कमल कोक कोकुल शंका शरीर कांति हृत सकल जन मन क्रांति सच्चिदानंद घन श्याम सुंदर भगवद रामचंद्र सेव कश्चन लीला विलासतया समागतः यह आमोद तच्चिकीर्षया ये तावते सा तच्चरणारविंद पंकेरुहे भृंगायमान मनसस्ते तावत ये भगवत संबंधेन ते भागवता भगवत संबंधिन भागवता भगवत इमे भागवता श्रीमंतो भागवता प्रतिपाद्या यस्मिन् तत् श्रीमद्भागवतम इति द्वितीयं समाधानं तावत्। अर्थात महाभारते भगवता सत्यवती नंदनेन स्वकीयानां संबंधिनां चर्चा कृता। पांडवानां भवन्तु वा कौरवा भवन्तु वा मूलतस्तु वेदव्यासस्यैव पौत्र परंपरायां वर्तन्ते संकल्पतो वा अन्यस्मादपि हेतोर्वा इति न विचारयामस्तावत्। किन्तु सन्ति तु ते तदेव परिवार संबंधिन एव तत्संकल्प भाजोपि तदीय पौत्राः अतएव बादरायणी वीर्यजे इति भागवतं संगच्छते विदुरस्य कृते। अर्थात महाभारते स्वकीयानां संबंधिनां चर्चा कृता भगवता वेदव्यासेन, किंतु नारदोपदेश संचिन्न पारिवारिक ममता जगज्वालेन विच्छिन्न संसार मोह जालेन हृदय सन्निहित भगवत चरणारविंद परम पावन तुलसिका मालेन सभाजित श्रीमद् रामचंद्र कृष्णचंद्र मंगलमय प्रतिमा तरुण तमालेन भगवता भागवते भगवत संबंधिनां स्वकीय संबंधिनां ने भगवत संबंधिनां चर्चा कृता इति मम किमपि प्रतिभाति। अतएव भगवता निगदितमपि श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धे पंचमे अध्याये यदा बदरिकाश्रमे सरस्वत्याः सविधे
संजातावसाद परिकलित भूरि विषाद दूरतोत्सृष्ट भगवत चरणारविंद परम पावन प्रसिमर प्रसाद श्रीमद् वेद व्यास चिंतयमान आसीत् तदैव विविध विद्या विशारदेन वशीकृत शारदेन भगवता नारदेन निगदितोऽयम् अरे वेद व्यास यथा धर्मादेश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः येन प्रकारेण मार्ते त्वया संसारस्य चर्चा कृता येनोत्साहेन परिवारस्य चर्चा कृता तथा भगवतः शिखिपिच्छमौलेः संविश्राणित गोपी नलिनयन महोत्सवस्य भग्न भक्त परिभवस्य सतत नवनवस्य परम पावन पादारविंद मकरंद विलोभित कोटि कोटि परमहंस परिव्राजकाचार्य शांत स्वांत भृंगस्य विगत संगस्य भगवतः कश्चन मधुरिमयो महिमा न वर्णितस्त्वया न तद्वचश्चित्रपदम हरेर्यसो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वायसम तीर्थमुशंति मानसा नेत्रहंसा निरमंतु शिक्षया अतएव भूवेद व्यास समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम समाधिं स्वीकृत्य समाधौ आत्मानं सन्निवेश्य भग्न सकल मनो व्याधौ भग्न सकल मानसिकाधौ दूर तो निरस्त संसार व्याधौ समाधौ स्वयं स्वात्मानं संप्रस्थाप्य भगवतो नंदनंदनस्य यशोदानंदवर्धनस्य मूचित भक्तभवबंधनस्य यमनार्जुनोद्धार संदर्शित तुरीयावस्थापन्न प्रपन्न प्रत्युत्पन्न व्युत्पन्न विस्मापक चातुरीकस्य विसर्जितातुरीकस्य तस्य भगवतः मंगलमयो महिमा वर्णनीयस्त्वया तदैव मनसः अवसादो व्यपगमिष्यतीति वर्तते कश्चन निरत्ययो मामकीन प्रत्ययः अनन्तरमेव भगवता वेदव्यासेन संसार संबंधिनां मोहं परिहाय विहाय च ममतामयीमिमां व्रततिं परिधाय च विरक्तवेशो वासः हृदय सन्निधाय च श्याम सुंदरम ब्रीजित कोटि कोटि मकर केतनम स्वीकृत नंद निकेतनम राधिका वल्लभम सकल मुनिजन दुर्लभम वेणुवादन तत्परम मधुर मुरली वादनम दैत्य विषादनम परम पावन वैष्णव कोटि कोटि वैष्णव जन निश्रेयस संपादनम भगवंतम भगवता वेदव्यासेन श्रीमद्भागवते भगवतः संबंधिनः चर्चिताः अतएव मया व्याख्यातम् भगवतः इमे भागवताः तस्येदमित्यनेन श्रीमन्तो भागवताः प्रतिपाद्यः यस्मिन् तत् श्रीमद्भागवतम् इति द्वितीया व्युत्पत्तिः। अर्थात यदि इदं मया निगदितुं भवेत् किन्नाम भागवतं तदाहं वक्तुं समुत्सहिष्ये यत् निरस्त समस्त हे गुण प्रत्यनीकत्वे सति संकलित समस्त सद्गुण निलयत्वे सति परिकलित पार्थिवीपति
पतित पावन परम पादारविंद परम पादारविंद भावना मय पल्लवत्वे सती स्वीकृत भगवत संबंध गुणगान समूह तम भागवतम इति न व्याकाचित विचारित परिस्थिति परिष्कृते मान्य अर्थात द्वादशाध्यायेषु द्वादशस्कन्धेषु ये खलु त्रयस्त्रिंशदध्यायाः ये खलु त्रयस्त्रिंशदधिक त्रिशताध्यायाः तत्र सर्वत्र भगवतः संबंधिनां चर्चा वर्तते इति भागवतस्य कश्चन सुनिश्चितः सारांशः मान्यः संसार संबंधिनः पीडां समर्पयन्ति भगवत संबंधिनस्तावत् ब्रीडित संसार पीडां विगत ब्रीडां परिकलित परिकलित परमानंद परमेश्वर परम पावन क्रीडां भगवती भक्तिमेव प्रयच्छन्ति इति वर्तते मामकेनः कश्चन विगत निश्वासो विश्वासः। अतएव तत्र भागवतस्य एकादशे स्कन्धे नवयोगेश्वर संवाद प्रकटके प्रणगादि योगेश्वरैः यत् भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत् चैषत्रिक एककारः प्रपद्यमानस्य यथास्नतुष्टिः पुष्टिक्षुदपायोनुघासम् अर्थात यथा कश्चन भुञ्जानः प्रतिग्रासं तुष्टो भवति प्रतिग्रासं पुष्टो भवति प्रतिग्रासं च निरस्तक्षुदपायो भवति तेनैव प्रकारेण समस्त सांसारिक प्रपंचं विहाय तस्यैव श्रीमच्चित्रकूट विहरण परायणस्य कोटि कोटि विविधांगना नलिन नव नयन नीराजित परम पावन व्यक्तित्वस्य विबुध विस्मापक मनोहर कृतित्वस्य तस्यैव समस्त जगती पतेः धनुष्पाणेर्जानकी जानेः चरणारविंदम शरणे कृत्य जे विराजन्ते ते निश्चितमेव न चिरात् भक्तिं परेशानुभवं जगद्वैराग्यञ्च सुत आञ्जस्येन प्राप्नुवन्ति इति वर्तते कश्चन निरस्त संशयः मामकः प्रणयः। अतएव भागवतस्य सारांशो वर्तते भगवत् शरणागति। अन्यं कमपि सारांशमहं न विभावयामि न वा विचारयामि। भगवत् शरणागतिरेव भागवतस्य मुख्यं तात्पर्यम्। द्वादशसु स्कन्धेषु भगवतश्चर्चा कृता। तत्र अवतारास्तु बहवः किन्तु बहूनाम् अवताराणां मध्ये मूलतश्चतुर्विंशतेरवताराणां चर्चा समकारि भगवता। चतुर्विंशत्यवताराः तत्र जगृहे पौरुषं रूपं पौरुषावतारः तदनु विराडवतारः इमौ उभौ अवतारौ पूर्वं वर्णितौ अनन्तरं द्वाविंशतिरवताराः पश्चात् वर्णिताः सनकाद्यवतारः वाराहावतारः नरनारायणावतारः नारदावतारः नरनारायणावतारः कापिलावतारः दत्तात्रेयावतारः यज्ञावतारः ऋषभावतारः पृथ्वावतारः मत्स्यावतारः कच्छपावतारः धन्वन्तरावतारः मोहिन्यवतारः
नृसिंहावतारः, वामनावतारः, परशुरामावतारः, वेदव्यासावतारः, श्रीरामावतारः, बलरामावतारः, कृष्णावतारः, बुद्धावतारः, कलिकावतारश्चेति। यथा गायत्र्यां चतुर्विंशतिरक्षराणि तथैव चतुर्विंशत्यवताराः सनातन धर्म भी समुत्थापिताः। केवल गायत्री मंत्र जपेन चतुर्विंशत्यवताराणां समर्चनं भविष्यति इति वर्तते कश्चन मनोज्ञो भावः। अतएव भागवतमिदं भगवदवतार कथनम नाम्नां विमर्शे चत्वारि नामानि मामकं स्मृतपथम आचुम्बन्ति। तत्र एतस्य ग्रन्थस्य प्रथमं नाम श्रीमद्भागवतम्, द्वितीयं नाम पारमहंसी संहिता, तृतीयं नाम उत्तम श्लोक चरितम, चतुर्थम नाम सात्वत संहितेति चत्वारि नामानि। एषु चतुर्षु नामसु भगवतः नाम रूप लीला धाम्नां मनोज्ञा माधुरी प्रदर्शिता वर्तते भगवता सत्यवती हृदय हर्षवर्धनेन। अतएव संगतमे तत् भगवतः इमे भागवताः श्रीमन्तश्चिते भागवताः श्रीमद्भागवताः प्रतिपाद्यः यस्मिन् तत् श्रीमद्भागवतम् इति। अनन्तरं यद्यपि समयस्य कश्चन वर्तते प्रतिबन्धः ममापि दूरतः आगच्छामि प्रातःकालमेव चलितोऽहम्। अतएव संकटस्तु वर्तते तथापि सर्वं सोढव्यञ्च संस्कृतानुरागिणां कृते सर्वं संस्कृतानुरागिणां कृते मया सर्वं सोढव्यं, जितो हम संस्कृताय समर्पितोऽस्मि। हम गर्वं न करोमि किन्तु कथयामि साम्प्रतं यावन्तोपि संस्कृतज्ञाः सर्वे वेतनभोगिनः आसन्, केचन वेतनभोगिनः सन्ति। किंतु अहमेव एतादृश संस्कृतज्ञ है यह प्रतिकक्षम 99% अंकान प्राप्यापि कदाप्यहम वेतन भोगी नाभवम इति मम गौरवम वर्तते। नवा स्ववृत्ति स्वीकृता मया सांप्रतिके कालेपि अस्यां परिस्थितावपि विमुद्रित नेत्रत्वेपि षडुत्तर 200 पुस्तकानि लिखितानि इति चित्रम्। प्रशंसामि नहीं किंतु भवन्तः ज्ञात्वा प्रशंस्यन्ति, अतः भगवतां प्रसन्नतार्थं निगदामि। भार्गव राघवीयं नाम संस्कृत पद्य महाकाव्यं लिखितं मया, भृंगदूतं खंडकाव्यं लिखितं, राघवाभ्युदयं नाटक काव्यं, कुब्जापत्रं पत्रकाव्यं, गीत रामायणं गीत महाकाव्यं, दशावतार चरितं गद्य महाकाव्यं चेति प्रस्थानत्रय्यां वल्लभाचार्यानन्तरं भवतां सर्वेषां शुभकामनया मयैव भाष्यं लिखितं, प्रस्थानत्रय्यां भाष्यं लिखितं। तो अहमिदं निगदामि यत् भागवतस्य तृतीयं वैभवम् अत्र स्वार्थे अण भवन्तो विदां कुर्वन्तु यत् भागवतमिदं परीक्षास्थलं वर्तते। केषां? विद्यावतां। धनंजय हाटक संपरीक्षा, महाहवे शस्त्रभृतां परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, तथैव विद्यावतां भागवते परीक्षा।
विद्यावताम विद्यायाः भागवते परीक्षा भवति। अतएव तो परीक्षा कारणादेव परीक्षित शृणोति। भागवतम परीक्षित शृणोति तो भागवते परीक्षा वर्तते। भागवते परीक्षा वर्तते। परीक्षाम तनोति इति परीक्षित प्रचोदनादित्वात् हरस्व तत्र चिंता न कार्य। परीक्षाम विदुषाम परीक्षाम तनोति विस्तारति इति परीक्षित जय इति नवीनम नवीनम व्याख्यानम तत्र परीक्षात इति जातम संपदादित्वात् कृप और प्रचोदनादीन यथोपदिष्टम इत्यनेन आकारस्य इकारः इति नव्यम व्युत्पत्ति वैचित्र्यम्। मान्यः तृतीयं व्याख्यानम भगवान सदैश्वर्य संपन्नः नित्यम अस्ति अस्मिन् इति भागवतम। अर्थात यत् ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वे सति नित्यत्वे सति परमात्मा भगवान रामचंद्रो वा कृष्णचंद्रो वा उभौ वा चतुर्विंशतिर्वा अवतारः निरन्तरं बिलालस्य विराज्यमानः विराजन् भवन्ति। तदेव भागवतम्। अत्र भगवान निरन्तरं विराजते। अतएव भागवत महात्म्य समावधाने सूतवचनम अक्षरशः संगच्छते तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। सर्वे कथयन्ति कि भगवान गतः इतः गतः। यद्यपि विजयध्वजो पाठमेमं विजयध्वजः पाठमेमं न स्वीकरोति नैव स्वीकरोति पाठमेमं श्लोकद्वयं सोऽपि प्रक्षिप्तं मन्यते। अतः हम भूरि भूरि तं वारं वारं प्रणमामि। वारं वारं प्रणमामि। अहं तु वैष्णवोऽस्मि। अहमपि विजयध्वजैव भगवतः तिरोभावं न सोढुं प्रभवामि न सहे अहं। नहीं, भगवतस्तिरोभावो न भवति। भगवान क्वापि न गच्छति। वृंदावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। तथैव अयोध्याञ्च परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। अतः साकेतादिगमनं प्रक्षिप्तं वर्तते। भगवतः रामायणस्यापि उत्तरकाण्डे इदं प्रक्षिप्तम् आगतम्। भगवान साकेतं न गच्छति। निरन्तरम् अयोध्यायां विराजते। भगवान वृंदावनम परित्यज्य कापि न गच्छति। नवा गोलोकम गच्छति। कंटकेन कंटकोद्धार द्वयमेवेषु तु समम् इमं पाठं विजयध्वज तीर्थो न मन्यते इति विभावयन्तो तत्र भवन्तो विद्वत्तल्लजाः। मान्यः। अतएव मया पुनर्व्याख्यायते भगवान नित्यमस्त्यस्मिन् इति भागवतम। नित्यत्वं नाम तत्र भगवता प्राञ्जलिना पतंजलिना समभाणी भूमनिंदा प्रशंसासु नित्य योगेति साहिने संसर्गेस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबाधयः। अत्र भागवते भगवान नित्यं वर्तते। अतएव अधुना समयं प्रतिबद्धनं नहीं शृण्वन्तु। महता परिश्रमेण समागतोऽस्मि। यद् भविष्यति तद् भविष्यति। कालोऽयं स्वकीयो वर्तते। वयं न कस्यचित् वेतनभोगिनः तत्र गमिष्यामः तर्हि फाइन् नामकं लगिष्यति। किमपि न भविष्यति। मान्यः। श्रीमद्भागवतस्य दशमस्कन्धस्य रासलीला समारंभे एकं कथानक एकं प्रकरणम् आगच्छति। यदा भगवान गोपी त्यक्त्वा राधां स्वीकृत्य गच्छति वृंदावन निकुंजान् तदा लिखति भगवान ततो गत्वा वनोद्देशं दृप्ता केशवमब्रवीत्। दृप्ता दृप्त शरणागति संपन्ना भगवती राधा निगतति न पारयेऽहं चलितुं नयमां यत्र ते मनः। अहं चलितुं न पारयामि यत्र तावकं मनस्तत्रैव मां नय इति निगदितः सन् भगवान कथयति एवं मुक्त प्रियामाह स्कंध आरुह्यतामिति। तत्र स्कंध आरुह्यतामत्र टीकाकारा विवदन्ते। केचन कथयन्ति कि स्कंधं वृक्षशाखाम् वृक्षशाखा आरुह्यताम्। केचन कथयन्ति स्कंधं मम स्कंधम् आरुह्यताम्।
किंतु अहम कथयामि इदम नहीं किमपि नहीं। स्कंध आरोहिताम भगवान कथयति हे राधे आवाभ्याम अधुना भागवतस्य 10वां स्कंध एव आरोह्यताम। हाँ, अतएव भागवतम नाम भगवन् निवास स्थलम इति तृतीयम्। अनंतरम वस्तुतस्तु भगवानेव भागवतम, अन्यत् किमपि भागवतम नास्ति, भगवानेव भागवतम, भगवानेव। यह भगवान अन्येषु युगेषु नराकारः, क्वापि कच्छपाकारः, क्वापि मत्स्याकारः, क्वापि वराहाकारः, क्वापि नृसिंहाकारः, क्वापि वामनाकारः, क्वापि परशुरामाकारः, क्वापि रामाकारः, क्वापि कृष्णाकारः, क्वापि बुद्धाकारः, क्वापि कलक्याकारः, तथैव साम्प्रतम् अस्मान् सुखयितुं भगवानेव भागवताकारो जाता इति मदीयं स्थापनम्। भगवानेव भागवतं वर्तते, तत्र स्वार्थे अण् प्रत्ययः वर्तते। एवं विधं भगवन्तं प्रणम्य युष्माकं भागधेयं वारं वारं वर्धापयित्वा समभिनन्दं समभिनन्दं च वैश्रमाणां पुण्यमनोरथान् अहं स्वकीयात् वक्तव्यात् विरमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। धर्मस्य जयोस्तु जयोस्तु अधर्मस्य नाशोस्तु, प्राणिषु सद्भावनास्तु, विश्वस्य कल्याणमस्तु। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।